Hi to all of you, those who are watching this video. This is part 6 of human reproduction where we will learn about spermatogenesis and oogenesis difference. Okay, so you know that spermatogenesis is the process of formation of sperm. Again and again I am telling you that wherever you see this word genesis, it means there is formation of something. So in spermatogenesis, sperms are formed, whereas in oogenesis, ova, that is the female gamete, is formed, right? Let's see what is the difference between these two. Spermatogenesis takes place in the seminiferous tubule, right? This is a section of the seminiferous tubule where you can see how spermatozoa are formed from the spermatogonial cells. Okay, spermatogonial cells are the mother cells. So this is the process which takes place in the seminiferous tubule, whereas oogenesis takes place in the ovary. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, oogenesis ओवरी में होती है. In spermatogenesis, male gamete, that is sperm, are formed, whereas in oogenesis, ovum is formed. Ovum is the female gamete, right? Spermatogenesis is a continuous process. Okay, as the male attain the puberty, that is after around 13 years, after that this process continues till the death, right? This is a continuous process, whereas oogenesis is discontinuous process. Here you can see this process arrests at few stages, like if the birth of the child is there, then at that time you can see that the primordial follicles, they get arrest themselves at the meiosis 1 stage. Okay, प्रोफेस 1 ऑफ meiosis 1. तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे अरेस्ट हो जाता है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स बन जाते हैं जिसमें प्राइमरी oocyte है. वो प्राइमरी oocyte that gets arrested at prophase 1 of meiosis 1 stage, and then later on the next process start after the puberty. So during the childhood time, ovary remain inactive, right? And here also when the secondary oocyte is formed, at that time also this process get arrested at this metaphase second of meiosis second stage. तो सेकेंडरी oocyte भी अरेस्ट हो जाता है, प्राइमरी oocyte भी अरेस्ट हो जाता है. ओव्यूलेशन किसका होता है? सेकेंडरी oocyte का, ओवम का नहीं होता. ओवम अभी बनेगा, it will be formed later on when the sperm enter or it will penetrate. Okay, then only this secondary oocytes gets converted into a mature ovum. ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है? डिसकंटिन्यूस है. दैन नेक्स्ट इज वन स्पर्मेटोगोनियल सेल विल फॉर्म 4 स्पर्म्स. ओके, एक स्पर्मेटोगोनियल सेल से कितने स्पर्म्स बन रहे हैं? 4. 1 2 3 4 स्पर्म्स आर फॉर्म. तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लाइक 100 स्पर्म्स बनाने हैं तो कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स इन्वॉल्व होंगे 100 स्पर्म्स के लिए? तो आपने देखा कि 4 स्पर्म्स जो है एक स्पर्मेटोसाइट सेल से बन रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से. 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज फॉर्मिंग 4 स्पर्म्स. सो 100 स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाउ मेनी स्पर्मेटोसाइट्स? It is around 25. Okay, so this question might be asked in your exams. So this is clear that 4 sperms are formed from 1 primary spermatocyte, whereas 1 ovum is formed from that primary oocyte. ठीक है, अब क्या होता है, इसमें पोलर बॉडी नहीं बनते, whereas in oogenesis polar bodies are formed. Around 2 to 3 polar bodies are formed which later on degenerates. ठीक है, sperms कैसे होते हैं? If you see the structure of sperms, they are motile, they are having tail to move, whereas this ova is non-motile. Okay, it is not having any appendages like cilia and all, some appendages they are absent in ova, so they are non-motile. Sperms are smaller in size and ova is larger in size. As compared to the sperms, ova is larger in size. Spermatogenesis is the process which begins after puberty. ठीक है, ये process puberty के बाद होता है. Whereas oogenesis क्या होता है? It starts in the fetus stage. Okay, जब फीमेल fetus form में होती है तभी oogenesis start हो जाती है. So this is the difference between spermatogenesis and oogenesis.
Let's see the flow chart of it. Okay, so here you can see this is a spermatogonium, and this is oogonium cell. Okay, one more thing which I want to make you clear that spermatogonium and oogonium are the mother cells. ठीक है, ये mother cells होते हैं. Now these cells undergo mitosis. ठीक है, इनमें क्या होगा, माइटोसिस होगी. अब जो सेल बनेगी दैट इज व्हाट वी कॉल प्राइमरी oocyte इन मेल्स. दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस, दिस इज oogenesis प्रोसेस. ठीक है, इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा और इधर प्राइमरी oocyte बनेगा. ठीक है, स्पर्मेटोसाइट, साइट मीन्स सेल, साइट का मतलब होता है सेल. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocyte, दीज आर द सेल्स इन विच मियोसिस इज गोइंग टू अकर. ठीक है, ये याद रखिएगा. स्पर्मेटोसाइट और oocyte जो सेल्स बन रही हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocytes, ये जो सेल्स हैं ये सेल्स होती है. साइट का मतलब होता है सेल्स. साइटोलॉजी यू नो, स्टडी ऑफ सेल्स. तो इनमें क्या होता है, मियोसिस होती है. इससे आपको याद रहेगा कि ये जो इनका नाम क्या है इन सेल्स का. ठीक है, इनमें मियोसिस होगी. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, मियोसिस 1 हो गई यहाँ पे. प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी. ये पोलर बॉडी बाद में डिस्कार्ड हो जाएगी. ठीक है, सेकेंडरी oocyte इस केस में बना, इधर क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिड्स. सेकेंडरी oocyte क्या बनाएगा, ooted. सी द नेम द सिमिलर, ooted. हियर इट इज spermatid. Okay, ooted is not mature right now. Ooted gets converted into ovum, and ovum is the mature female gamete. And you know that secondary oocyte is released after ovulation. Okay, in the ovulation process, secondary oocyte is released, that is later on converted into ooted when the sperms enter. अगर sperm enter करेगा, it will penetrate, then only that secondary oocyte get converted into ooted, and then ooted matures to form the ovum. Okay, if in the case of spermatogenesis, these spermatids, they get differentiate and they forms the structure that is what we call spermatozoa, or we can say they are the sperms. ठीक है, these are the motile sperms. याद रहेगा. Okay, so this is all about the difference between spermatogenesis and oogenesis. Hope you like this video. Thank you.